Uh, all right, recording is also started. I will check on my laptop also whether your chat is saved there or not. Otherwise, um, I want to give you. Okay, I was asking that somebody wants to share. Can anybody share any personal experience, any view about it? Yes, class. Yes, ma'am. Gigi, please share some Ma'am, experiences, your life, your personal experiences. मैम मैं ना जब असेंबली खत्म होती है तो हम अपनी क्लास में जाते हैं। एक्चुअली ना मैं प्री नर्सरी की टीचर हूँ, तो ना जी जी मैं ना क्लास में जाते सार बच्चों को जंपिंग करवाती हूँ। लाइक बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो ना पूरा एग्जैक्टली। टाइम एनर्जेटिक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो हमारा मॉर्निंग टाइम हो गया ना। जो खैर अब द वंस हु आर वर्किंग इन प्री स्कूल उनके लिए तो बहुत इजी है बिकॉज थ्रू आउट द डे दे आर हैविंग फ्यू और one after another activity also. They get time. But in primary and secondary, they hardly get any time except recess. Except break, there is no time for them to enjoy or to have something in the classroom. So for them, these starter activities, transition activities should be must. All right, I hope that it is clear. एवरी डे। Yes, every day. That's what I'm telling Nadir. Take out 5 minutes every day with your child. No matter you are doing any activity, just talk with them. That doesn't matter. Or just bring some paper and tell them to draw something on it. Share your views and give it to you. Whether you check it or not, that doesn't matter. But indulge them in something for 5 minutes that makes them happy. It should be every day, 5 minutes for them every day. So they don't feel like that. And it's not difficult. Believe me, we were having, even in Pakistan, I'm telling you, we were having transition activities for 5 minutes. Transition means that switch off your mode of the classroom, transit your mode from teaching to something other. Just give them 5 minutes. That 5 minutes make them so happy. Like a warmer activity, icebreaker. Yes, Shafak, are you saying something? Yes, ma'am. I am saying like a warmer activity or a icebreaker. So many voices are there. Sorry, Shafak, I can't hear you now. You can say Shafak. Like a warmer activity or a icebreaker. Yes, like a warm-up activity, voice breaker, or something like that. Simon says you can play, you can have some drawing on that. You can use your Tinker Club activities for that. You can use your well-being activities for that. ठीक है ना? Anything you can have. हाँ मैम, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं कि भाई ट्रांजिशनल एक्टिविटी क्या होना चाहिए, क्योंकि हम ग्रुप एक्टिविटीज में काम करवाते हैं क्लास में। फोकस ग्रुप और ग्रुप में अदर ग्रुप होते हैं एक्टिविटीज के लिए, उन्हें स्विच ऑफ करना होता है आपस में इसके लिए मैम। नहीं तो नहीं उसके डियर, लिए मैं वो क्या, नहीं, वो तो आपकी नहीं ग्रुप वो तो मुझे एक्टिविटीज समझ होंगी। आ गया, वो मुझे आपकी हाँ बात जी। समझ आ गई है कि जो भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वार्म एक्टिविटी या आइस ब्रेकर जो हमारे उसमें लेसन प्लान वाली होता है वो करेंगे। There's so many work. Please mute your mics, first of all. And who was talking now, I don't know. Because I muted all the mics. Who was asking me a question, please? Somebody was asking me a question.
Okay, let's start. Can you see my screen, everyone? No, ma'am. It's black, ma'am. It's black. No, ma'am. No, ma'am. Wait, I will. All right. As I have discussed already, what is the role of a teacher in Islam? Because it is a Sunnah profession. So we have to be very clear and concise about our profession also. So my main purpose of teaching everybody is, and it's not about teaching actually. It is actually I'm bringing awareness about this profession and the good things about this profession and how you can change yourself and how you can modify yourself by learning new things. So that we have already discussed, we skip this part. In this whole session, we are going to discuss which things that we are going to, in first session, we are going to have concept of phonics, difference between phonics and Jolly Phonics, 5 skills in Jolly Phonics. What are the basic 5 skills you have to follow in Jolly Phonics, which are not in phonics? Then second, we are going to have Jolly Phonics start with letter or sound S. 42 different sounds, their orders and letters, and what sight words or tricky words are related to that. Then 5 pillars of teaching Jolly Phonics, methods of teaching Jolly Phonics and its components. Fourth will come pre-writing skills. I will tell you and I will give you the whole PDF file of pre-writing skills also. Learning aids to use letters and sounds, whatever the possible things I can provide you, I will give you that also. What are differentiated activities and how you can plan that. Then blending and segmenting, tricky words, sight words, long and short vowels. Sorry. Okay, what is an effective lesson plan for phonics? Anecdotal notes, and at the end, progress checks or baseline assessments, especially because phonics is for preschool, till preschool, like if you follow this, then you can have phonics in nursery, KG, and prep class also, and even phase 5 is for grade 1 also. So if you like, I have heard before in my workshop also that we used to do phonics in nursery, we use introduce sounds in phonics, but later we cannot do it. The reason behind it, I will tell you why you can't do it, because you even don't know the basic sounds of phonics. That's why you cannot carry forward. Otherwise, every single word is having
a connection with it, because there are not only 26 sounds, there are different 42 sounds and more also. I'm going to teach you till prep level, but I will show you the chart of grade 1 also, that is phase 5. Okay, so we are going to work on all these concepts. I will try to complete my 2 sessions today because we have lost yesterday's sessions. Otherwise, few of the things I will complete today and few will carry forward to the next session. Okay, are you okay with that? Or should I do with the first session only? Hurry up, class, tell me. Should I go with the first session only? You want me to continue with the other session? Few of the things I will introduce and few are carry forward for the next one. Miss Radha, we will continue with the second session also. Okay, okay. I will try, okay? As much as I can do, okay? All right. Now, in this session, what we are going to learn is that what is the concept of phonics, what is the difference between phonics and Jolly Phonics, and what are the skills we have to use in phonics to teach phonics. Okay. Basically, the concept of phonics is for pre-learners. I already told you. It always start with either you are having playgroup or nursery or whatever the first step in your school is, or you are working where the school is. You start with phonics. Okay. We always start the letters. Nowadays, everybody know that letter starts with phonetic way. Okay, in phonemic way we are going to introduce them to our learners. We use sounds only, and how we convert the sounds into letters, and we tell them that on the later stage that these sounds are the part of these letters. So what are the things that help you in teaching phonics and making it clear to your learners? First of all, they will get the letter recognition. By the sounds, they will get the help to recognize the letter. That then phonemic awareness. Every word, every letter, every sound, every word and every letter is having a sound. Even the word is also. For example, the first word in this slide is teaching. Okay, can anybody tell me that how many sounds are there? In word teaching, how many sounds are there? Just tell me that. How many sounds are there? Three. Sorry? Three. 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 Five. Can you please answer me one by one, dear? I can't hear you, Shamila, I guess. Shamila, I can't hear you properly. You can write in the chat box. Who else want to tell me how many sounds are there? Then I'll tell you how many sounds are there. Ch, E, ch, ink. Okay, very good. Shafak, very nice. But this ing is not a sound. Okay, ing is also having two sounds in it. E and ng. Ng is also a separate sound. So your answer is much corrected, that it is having 5 sounds. Okay, th, t, e, a, ch, ch, e, I, ng. Okay, ng is also separate. So it's th, e, ch, e, teaching. All right, 5 sounds are there. E is a digraph sound, ch is a digraph sound, and ng is also a digraph sound. Ing is not, ing we used to say, or our words, dancing, use ing. Okay, but ing is not a sound. Okay, it's not one sound. Ing is also having 2 sounds in it. I is separate, e, and n and g is separate, ning. Okay, ing. So basically, this is having 5 sounds. So you have to teach your children in such a way that wherever the digraphs are coming, wherever the trigraphs are coming, they should know
that which sound they need to produce or make at that time. So it will become very easy for them to learn big words and tricky words also. So letter recognition will come there. Then phonemic awareness will come there definitely when they are going to learn all this. Their phonetic awareness will come to them that every letter is having a sound. Sound letter correspondence, what is the sound and what is the letter of that correspondence, we are going to teach them also. Sight words, whatever the sight words. Actually Jolly Phonics में साइट वर्ड्स कैसे इंट्रोड्यूस होती है वो मैं आपको बताऊंगी कि साथ साथ आपने कैसे साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करनी है. Then multi-sensory activities, जब आप differentiated activities करती हैं तो so many activities come in that which involve their sensory activities also. Then again practice and recognition and repetition is must in that. ठीक है, all these things are actually basically the phonics awareness. ठीक है, this is the parts, these are the steps which involve in teaching and learning phonics both. Okay, if you are a good learner, then definitely you will be a good teacher of phonics also. Got it? So moving towards the next, these strategies also involve your sounds, music, games, then differentiated activities involved in that. Okay, and then reinforcement is also very important. It's not like that one day you are teaching one sound and the other day you are not repeating that. Please link to your sound, and I will tell you how Jolly Phonics sets linked with each other. There is a continuous repetition in that. You don't need to repeat. You are not going to repeat that. But the words and the way we produce, we make them teach Jolly Phonics, there is an automatically revision is coming in that. Okay, moving towards the next slide. Okay, old phonics, okay, that is simple phonics. Their general concept was that they are going to tell the sounds, and they are going to have the relationship of sound and letter, and children are going to read and write only that. These different only approaches were involving in that. They were having sandpaper letters, they trace the letters, and they have the sound with that, and they mix it up, and then they decodes the words and blending the words and everything. But there is no differentiation in that. There was no phonemic awareness in that, how words relate with each other, what are the different sounds in it. They thought that only 26 phonic sounds are there and that is enough. It is not enough. There are so many different sounds also creating. There are silent words also, double letter word also, long vowels also, short vowels also. So there are so many actual sounds in fact. A to Z. Okay. Old was typically like that the sounds are from A to Z only. A, B, K until Z, the sounds are finished. That's it. That's why teacher cannot proceed it to the next level, because they were not aware of the difficult word and tricky words and the sounds. So general concept was that only teaching and reading and writing and correlating the words and sounds with each other. And there was not much like they were not much, they don't put much pressure on that. Okay, they just told the relationship of letter and sound in simple word. Okay, nothing else they were telling, only blending the words on later stage. That is also CVC words, in which 3 sounds are separately over there. There were not difficult sounds in it. There were not silent words in it. There were not much digraphs or trigraphs in. Even 3-letter words are having digraphs in it. Okay, even 3-letter words are having trigraphs in it. For example, ear. E-A-R, ear. Ear is basically a trigraph. So we don't know that, and we never teach ear as a sound because we cannot separate the sound. E, A, R. There are 3 different sounds. E, A, R. A, R. If you go by sounds, E is having A sound, A is having A sound, R is having R sound. So that is something else. That word totally changed. But basically, ear is a trigraph.
EAR. Wherever you see EAR, it's a trigraph. It says ear. Okay. Now I will also tell you that how sounds, there are words in which you use sounds, and even there are words in which you are going to use the letter name. For example, EA sound. What is a sound? EA, like in the word bean. B, E, M, bean. EA, it's coming EA between. B, E, M, bean. Now, E sound is basically a sound, but A is not coming. E and A both are vowel. Whenever you are going to use two vowels together, keep it in mind, mark this, write this, that the first letter name will become the sound. E, A. E is A is A. Both are similar sounds. But when we are combining them, then the sound becomes E. What is the first letter? That is E. The name of the letter is E. So the sound becomes E. Whenever you see E and A together, the sound is E. B, E, M, bean. All right. Later I'm going to teach you all these sounds together. So these are the things we were not emphasizing before in simple phonics. Now, if we come to the Jolly Phonics is actually a program by Jolly Learning Limited, where a person whose name is Jolly, actually, he introduces that. That's why it becomes Jolly Phonics. Later, it becomes a program also, where it was taken by Sue and Sarah, and they bring so many new innovative things, that they bring action songs in that then they relate the one sound with a story. All the story is with all those words. Actually, basically, they used to teach. They don't show the sound, tell the sound, and teach the sound. What they do, they make stories and they ask the kids what is the main thing you heard in that story. For example, if we are having a story, so they are going to relate all the words of a in that story, and by listening all the words of a again and again and again, the children will automatically come to know that okay, this is the common thing in that, and maybe today we are going to learn something related to that sound. For example, what we used to do, if we are teaching them, because it starts with S, so I'm teaching them with S. So I ask them different questions. I take them outside and ask, what do you see in the sky? What is that? What is above you? They will say sky. Then what is on the sky? There is a sun on the sky. Okay. Have you seen anything around? And we ask them if we are having, or otherwise we display things in front of them that are related to sound S. When they pronounce it again and again, they have enough knowledge of that. Otherwise, they will give you another way, any other name of that also. But although they are having enough knowledge for all those sounds, then by the end, they will definitely tell you that, okay, today we are going to learn. Then we teach them this is a sound related to the letter S, and we teach them together. It's not like that we tell them the sounds only, we teach them the letter also at the same time. Is a sound, S is the letter. Many of the school are practicing that S, capital is the letter, small is sound. No, capital is also sound. So it's the letter name is S, the sound is, you are going to tell them together. You're not going to differentiate. The capital letter is your letter and small letter is your sound. No, it's not like that. Both are sounds. Both are letters, both are sounds. That is something else. That capital and small is something else. But they both are letters and they both are sounds. Okay? So, Yes, ma'am. okay, got it till now? Yes, ma'am. Okay, now what is the basic thing? What is the key feature? First of all, we are going to include multi-sensory approach. That was before, it was on third or second step in phonics. But in Jolly Phonics, multi-sensory approach should come on first.
by action, by stories, by songs, by games. You are going to teach them the letter and sounds. Okay? Like again and again, they are using letter sounds. Okay, letter and sounds both are going to teach at a time. You're not going to differentiate them. Okay, multisensory approach will come first. That you are going to also learn in your lesson plan, that how multisensory approach will help you in making them learn the letters and sounds together. Then 5 basic skills in teaching the letters, learning the letter sounds. After multisensory approach, what are the things you have to keep in mind? That they are going to, Gigi, sorry. Somebody saying something? No, ma'am. Acha, okay. Okay. 5 basic skills after multisensory approach will go learning the letter sounds, learning letter formation. ठीक है, फिर definitely जब आप उनको बहुत सारी different stories और actions और songs और game के through एक चीज को learn करवा देंगे, तो definitely sound and letter will come. They will understand what are the letters and what are the sounds. Then letter formation will come definitely. उसके बाद आपकी letter formation आ जाएगी, वो भी आप easily. उसके बाद उसके साथ ही आपने उनको blending सिखानी है, वो grouping कैसे होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ. फिर identifying sounds in words. आपने नहीं सोचना कि आपका बच्चा सिर्फ साउंड कर सकता है. प्लीज शुरू से ही उसको आदत डालें छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल चंक ऑफ वर्ड्स की, जहां पर वो आइडेंटिफाई करे उस साउंड्स को. इट कैन बी बिगिनिंग, इट कैन बी मिडल, इट कैन बी एंडेड ऑल्सो. ठीक है, the sound can come anywhere. It can be a beginning sound also or it can be an ending sound also, because middle में usually आपके पास vowel sounds ही आते हैं. Keeping the vowels aside, when you are going to teach the vowels, then definitely those words are going to come in the middle. But you have to teach those words to them. Beginning sounds also, ending sound also. उन letters और words को आपने इस तरीके से, खास तौर पे letter और sounds को इस तरीके से लगाना है कि बच्चे उसको देखिए विद पिक्चर्स. ठीक है, अगर शुरू में वो ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स नहीं कर सकते तो देयर शुड बी अ पिक्चर आल्सो ओवर देयर. बाय द रिकग्निशन ऑफ द पिक्चर दे विल हेल्प टू नो. और जितना विजुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, विजुअल लर्निंग इज आल्सो देयर. ठीक है, इसमें मोस्टली द वर्क इज ऑफ विजुअल लर्निंग. So you have to increase their visual learning power also. In that, they will be able to do the blending and segmenting and then identifying the sounds and the words. Then the tricky words. How we are going to introduce the tricky words along with that, that I'm going to teach you. That along with that, you are also teaching them the tricky words also. Okay, your approaches should be very systematic and progressive. ठीक है, learning phonics is not easy also and not difficult also. But if your approaches, if your your work is structured, then it becomes very easy for you to teach them. Teacher and parent resources should be there. Because many parents doesn't know about the phonics, and especially the Jolly Phonics, it's not easy to teach. So have a session with them also before, if your school allows, or tell them your school, tell to your school also whenever you are going to introduce a new thing in front of the kids, or especially for the kindergartners, please bring your tell them to have an orientation session with parents also. It is a must, because they should also know what you are teaching them in the school and what are the progress, what are the things their children are going to learn from you. Your introduction should be there. In our culture, in Pakistan especially, it is not happening. But in UAE, we are having an open orientation session with parents where we introduce ourselves, where we give our numbers, where we give our email IDs. Then we tell them the whole year plan to the parents. Yeah, how things are going to, if we are asking them for something, what are the things they are bringing, how we are going to use them also in the classroom. We never hide anything from them, because we also ask them stationaries, we also ask them books, so definitely it's everywhere, but we do ask them stationaries also. So we tell them, if we need a box file, what we are going to do with the box file. If we need a Play-Doh, what we are going to do with the Play-Doh. If we need tissue boxes, what we are going to do with the tissue boxes. If we need small boards and markers, what we are going to do with them. So we tell them each and everything. We make them clear that these things are totally used by your kids. It's not going to use by teachers. They have their own separate cubbies. We have labeled them already. And when they come for orientation, many parents bring their things on orientation.
They find out their child's name and they them by themselves put in their copies. So if somebody is here who is related to the management or coordinator or supervisors, please have an orientation session with your parents, especially before introducing yourself to the kids. You have a good introduction with the parents also. So your resources should be very clear to parents also. It's not something you are giving a very hype kind of thing to the parents, and in the classroom you are doing this normal things. No, whatever you are doing in the classroom, please show that to parents also. So I am telling you the summary of phonics and Jolly Phonics is very clear to you. I hope that everybody have a clear instructions, clear picture of phonics and Jolly Phonics. Yes, ma'am. Is it clear now? Okay, what is the purpose of phonics? What we were doing in phonics and what is the purpose of Jolly Phonics? Yes, ma'am. Okay, any question till now, because this session is ended. Now we'll proceed to the next session. Okay, ma'am. Sadar, can you provide the PDF of this Dear, we can't hear you properly. will you provide the PDF from this topic? PDF of these word material I am going to provide you. Whatever the written material in it, na, I'm going to provide you the PDF. Okay. Thank Okay, you. and even recording session will be there too. PDF will be provided also in the group. And one more thing was there, whatever the resources we are going to use, I'm going to share the resources with you also. Okay. Thank you so much. You're welcome, dear. Okay, quickly I recap the skills, the 5 skills separately. The 5 skills were learning the letter sounds. These 5 skills which we have discussed: learning the letter sounds, learning letter formation, blending, identifying sounds in word and tricky words, how they are going to help and what are they actually. As I told you, learning the letter sounds, basically there are 42 sounds in first step. Okay, I'm not talking about in phase 5, that is grade 1, but from pre nursery playgroup till prep class, you are having major sounds, starting sounds, including your digraph and trigraphs. There are 42 and more sounds are there also. Trigraphs are also there, but main 42 sounds are there that you are going to teach first. It's not like that you are going to break it or you are not going to do it. How you are going to shift it. If you are having some set rules for your nursery, you are going to use those sounds, but in the same order. And Jolly Phonics starts with S, Satpin words. Okay, if anybody heard of that, they might know it, that Jolly Phonics start with Satpin words. Satpin. First 6 letters are A, T, P, E, M. G. Why we always start the Jolly Phonics with the letter S, ma'am? That I'm going to teach you further. The next slide is of that. Okay. Okay. Why we start with S? Why S is very common? Why we start with S? Why Satpin words are there? It is also very interesting thing. Okay, so these 42 sounds are there. Method, again, using the method of multisensory techniques, you are going to use songs, action, stories to make the sounds memorable and easy for them to understand. Benefits, what are the benefits? Because they are going to learn the sounds and letter combination of letters. Okay, different combinations of letters that sounds are making, and with that they are going to learn the words also. Okay, they produce new vocabulary. They are having they'll become having a reading fluency in general. Okay, if you teach them with words. But in Jolly Phonics, it started with words. When you complete the first set, that is that thing, then the word building will start. Not in your nursery, but in your next step. Nursery, you are going to teach them the basic sounds. Only the sounds. Okay. Now learning letter formation, same. Then we are going to move towards the formation of the letter.
how to tackle the different words. They can have different tracing activity, visual aid activities, tactile methods you can use, like writing on sandpapers or something like that, or finger paintings and all that, that you can use to teach them the letter formation. And don't focus on the letter formation too much. Okay, straight line means straight line. That doesn't effective. Okay, it's not necessary. If their hand is shaky, let it be like that. If their words are flying in the air, let it be like that on initial basis. Do teach them. I know it's difficult in Pakistan, but still have some flexibility in teaching the sounds to them, especially when writing comes. Then blending the sound automatically when we complete the sat pin set, there will be the blending of the words will come. Like in self sat pin, there are two words, sat and pin. They will automatically learn, and whatever the words coming with sat pin letters, they will learn those words because they are simple 3-letter words and they can read and they can write also. You have to make small flashcards with them. It's very easy. You can make word cards with them, letter cards with them. They can join it, they can break it, they can make it, they can do thousands of activities with them. And blending is very easy for them because you have already taught them in that way. Why it started with S, that is the reason why I'm telling you in next. Now, identifying sounds and words, again, thing which I tell you, when they know the blending of the letters, they can easily identify the sounds in those words. Whatever the sounds in words are coming, even those words are difficult, but they will definitely give you a response of that if they knew the sounds very well. They can blend in, and how to tell them that how they can blend the words into, blend the sounds into making the words. Then the last thing is tricky words, using the order we are learning in Jolly Phonics that start with letter S, A, T, P, I, N, then M, D, G, O, go. These words will come and I'll tell you later. The purpose of this word is that so many basic sight words which you call 2-letter words are also coming in that, and you are going to teach them those words according to that, along with that. Okay, along with your sounds, letters, blending, and making the words, you are going to teach them the tricky words of 2-letter words. Initially in set 1, in phase 2, these are phase 2 words. Phase 2 words may you complete approximately 20 sight words. Okay, that will help them in doing the sentence making. And how you can do the sentence making, that is also very easy. I will tell you later. You can make sentence starter cards. They don't know anything, but you can make sentence starter cards for them, and they can use those sentence starters along with those words, basic words, phonic words. Okay, and they can join sentence starter with those words and they can make a whole sentence. What happened जब आप उनको sentence starters देते हैं, छोटे छोटे sentence starter, this is I can see, this is a, that is a, I have a, ठीक है, simple with I, okay, with her or his or herself, and you can give them separate words also, so they can join it later. Maybe initially they make some funny sentences, but by the end you will see that they are making progress and they are making their own sentences, keeping the environment in their mind also. Not every child is same. So you can do the practice of sentences also in the same time. Maybe it seems difficult for you while hearing, but believe me, it is very easy if you properly follow Jolly Phonics. Only then. If you follow only phonics, then it would not be possible. But if you properly follow Jolly Phonics methods and technique, then definitely by the end, not only they will learn the letters and sounds, they can do the blending, they can make new words, they can learn sight words, and they can make also sentences by the end. By the end, in the middle also. Okay, and then overall benefit, we have discussed about that already, because it increase, they get motivation from the stories and songs, and multi-sensory approaches are again and again coming in it.
then confidence and independence. Definitely in literacy, literacy is a long way. Literacy is a it's lifelong thing for learner. If they learn good things in that, then they can help them work independently initially. They can easily work independently. So these were the things. Now we'll come to the session 2. We have discussed so far. If you want to ask anything regarding session 2, session 1, please you can ask me so I can further work on that. Anything which is not clear, which is not easy to understand, then you can ask me, please. Hurry up, class. Segmentation और identification में difference क्या है? इसमें जी Segmentation and identification में difference में segmentation or segmentation and identification of sound letters. segmentation is blending and segmenting, तोड़ जोड़. Segmentation है blend and segment is तोड़ जोड़. Identification to identify the sounds है ना. Okay, what is the sound of that letter? That is identification of the sound. ठीक है. Segmenting and blending is one thing, जिसको हम उर्दू में तोड़ जोड़ बोलते हैं. Right, ma'am. ठीक है ना. They first blend, then they segment. ठीक है. Blending different sounds and segmenting one sound and then the identification of that sound. All right, ma'am. ठीक है ना. Anything else here? किसी और ने कुछ पूछना है? No, ma'am. Clear. Everything is clear. Clear now? Okay, let's start. Okay, why Jolly Phonics start with letter S? Yes. Think around you and think about few words in the mind. Difficult words, it can be difficult, or leave the difficult words. Whatever you are seeing in front of your screen. Okay? There are so many words, session 2, vault, then recapitulation, why Jolly Phonics start with sound S, 42 sounds and order of letters in Jolly Phonics. Just tell me which letter is using most. SATIPN, ma'am. Yes. The first letter is S. Mostly in your words, the use of letter S is more. The first set of letter na SATPIN. These 6 letters are basically using overall in your English language. Mostly. Like hardly there are words which are without SATPIN. Hardly. Except these sight words. Don't consider sight words in it. Like with is a sight word, the is a sight word, for is a sight word, and is a sight word. Okay, these are sight words. Sight words, basically sight words may you don't need to learn with sound. Sight words, you are going to teach them with letters. That's why I'm telling you, initially when you are going to introduce them sounds, you are going to introduce the name of the letter also. Together. S, S, A, T, T, together. Because both are letter, both are sounds. It's not like that capital is a sound and small is a sound, and capital is a letter and small is not a letter. It's not like that. Both are letter, both are sound. So basically the purpose of doing that is this. S is very common word. Nida, can you please turn off your screen, dear? So the common sound or frequency of use of S is more. That appears in many simple words that children encounter earlier also or in their daily life also. Okay? While producing the sound S, there is much clarity in it. Okay? It's a simple sound. Whenever the words they are using in phonics, the use of S sound is more in different words, in words especially. So that's why Jolly Phonics start with letter S.
It's simple to pronounce, very simple, very easy sound, very आ रही है, easy. मैं कह तो रही हूँ आ रही है. Dear, somebody's mic is on. Nida and Shamila. Okay. Okay, so far now it's clear why we are using S sound, because it is very common word to use. The clarity of the sound is very easy and it is very simple to pronounce also. Then next we are having visual representation of the sound is also very easy. And then word formation with the sound is also very easy. There are so many words that can blend with S, and for quick learners, for early learning, as you can see in SATPEN also, we will use so many words in that, and that will help them in their early reading of words. Okay, these words are so easy. When you try with them, they can learn the words very easily. All right, now it is also having a systematic approach also. Okay, because many of the words produced by mixing vowels and consonant, as you know that the basic words we are going to teach them, those are called CVC words. What is CVC? Consonants, vowels, and consonants. First word is a consonant, then a vowel, and then a consonant. So consonant S is also a consonant word. So blending will help them a lot. S fits in systematic approach. It is in every word. It is in most of the words, and it is mostly those words which are using on daily basis. So that's why S is the thing which is coming in the first sound. Then multisensory approaching, that is must for every program in phonics. Okay. Now action of S is also very easy. You can make a sound with S with your hand. Okay, simply telling them how to do that with S. Snake. Snake. Wave your hand in the ear like S. It's not necessary that the shape they make it very, because if you observe a child when holds a pen, either they used to make circle or they used to make wavy lines. You have never seen, I have never seen a child, there are hardly few children who used to make straight lines or who used to make parallel lines. Very difficult. Either they are making circles, they used to make circles. Earlier, there was a phonics that started with O also. If somebody worked in 2008, 9, 10 in schools with phonics, at that time we taught them to start with letter O. There were books also, a few publications who start with letter O. Why? Because the child used to start with letter O. But later on, that strategy changed and they told, no, the child used to make, mostly child used to make wavy lines. Time to time changes are coming. So they told that childs are used to make wavy lines. So the letter S sound, only this sound is having this shape. Other sounds are different. Shapes are different. Mostly sounds are straight or curvy or having tummies. But this is the only letter which is having a curve shape, a snake kind of shape. S is the only sound with this shape. Other letters are similar to each other. You can make their sound, their representation and their writing association together. They can associate with each other. But S is the only different sound, different letter formation also. So that's why this is the principle, or this is the reason why Jolly Phonics start with letter S. The most important is that mostly this word is using in your language, in your daily day-to-day life. The sound is very easy. The sound is very familiar, very simple. And then the writing and recognition part is also very easy. That's why it starts with letter S. Am I clear till now? Yes, ma'am. Or from everyone? Any question Yes, ma'am. related to that, please? You can ask me. Don't hesitate. Okay?
Later on, I was getting messages that, ma'am, I want to ask this and I want to know about this, but I can't ask in class. Please ask me. We are all ladies over here. This platform is for learning. Feel free to ask. मैम आप एक्टिविटीज की कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ, मतलब डिस्कस करेंगे जो इसमें हेल्प आउट करे हमें कि जो बच्चों को रिकग्नाइज कर सके, साउंड्स में हेल्प कर सके। एक तो जैसा जॉली फॉनिक्स के होते हैं विद एक्शंस हम कर रहे होते हैं, बच्चों को वो याद हो जाते हैं, तो इसी तरह कुछ एक्टिविटीज जो हेल्पफुल हो इनके लिए। डियर, आपकी आवाज मुझे ना इससे डबल होके आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। आप पूछना चाह रही हैं कि मैं कोई एक्टिविटीज शेयर करूं आपके साथ? कौन पूछ रहा था और कहाँ चला गया? अच्छा, जब हम लेसन प्लान बनाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि एक फोनिक लेसन को लिखा कैसे जाता है, उसका लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, उसमें पहली चीज क्या है, और उसको स्टेप टू स्टेप कैसे हम एक ही लेसन को लेते हुए उसमें हम वर्ड भी कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, सीबीसी वर्ड ब्लेंडिंग एंड रीडिंग भी कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। ब्लेंड एंड रीड के कार्ड्स अलग होते हैं, ब्लेंड एंड रीड की वीडियोस अलग होती हैं। अब आई एम नॉट श्योर वेदर यू कैन यूज वीडियोस इन योर स्कूल्स और क्लासेस और नॉट, but if you can use, then I think it is very easy for teaching phonics. There are hundreds of stories. We use YouTube. Frankly, I'm telling you, we use lessons from YouTube. Like वहां से वीडियोस को लेके, वीडियो लिंक्स को लेके ही हम अपना पूरा फोनिक्स लेसन बनाते हैं। जी सफिया, यू वांट टू से समथिंग डियर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि हमारी जो मैं जहाँ पढ़ा रही हूँ वहाँ पे हम जॉली फोनिक्स ही लेकर साउंड्स और उनकी जो पोम और स्टोरी है उसी को लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन मैंने वहाँ ऑब्जर्व ये किया, जो हमारे पास पीजी में और नर्सरी की जो टीचर्स हैं वो साउंड तो लगा देती हैं, ऑडियो भी और स्मार्ट एलईडी भी यूज कर रही हैं वट एवर, लेकिन वो क्या कर रही हैं उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता कि व्हाई वी आर गोइंग टू यूज जॉली फोनिक्स। मतलब बस एक वही वाली कॉन्सेप्ट है कि बस पढ़ा दें और ये कर दें। लेकिन एज अ प्रेप टीचर जब मुझे थोड़ा सा ये इशू आया कि जब बच्चा मेरे पास पहुंचा वहां से, तो मैंने ऑब्जर्व किया उसके एक तो साउंड क्लियर्स नहीं नहीं थे, दूसरा ये था कि हमें वहां पर रेगुलर और इरेगुलर वाउल्स पे भी काम करना था। तो वो चीज मुझे समझ नहीं आई, और मतलब मैं करवा तो मैंने भी दिया उसी तरह से लेके जिस तरह से सब चल रहे थे, लेकिन वो चीज मुझे भी समझ नहीं आई और फिर मैं इसमें अटक गई कि ये तो जॉली फोनिक्स का ही कुछ है सिलसिला। और दूसरा ये कि मुझे ये पूछना था कि एक साउंड को हम कितने टाइम बच्चे को जब हमारे पास बच्चा आ रहा है तो कितने टाइम हम उसको करें ताकि उसको इम्प्रिंट हो जाए उसके माइंड में, और जो भी चीज है प्लीज ये भी बताइए। थैंक यू। हाँ जी यार, उसमें यही है कि जब तक इनिशियली, मैंने आपको पहले कहा है कि इनिशियली अगर आपने फर्स्ट लेवल से ही बच्चे को सही तरीके से साउंड्स नहीं प्रिपेयर कराए, आपके पास तो प्रेप में तो बच्चा जाएगा तो वो तो बहुत कुछ सीख के आना चाहिए। 42 साउंड्स प्लस ट्रायग्राफ्स प्लस डिफिकल्ट वर्ड्स प्लस एवरीथिंग, आपके पास उसको हर चीज आनी चाहिए। आप उस टाइम पे उसको नहीं सिखा सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। आप बेसिक नॉलेज ऑफ साउंड्स दे सकते हैं उनको, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि वो उन्हीं साउंड्स को लेके वर्ड बिल्डिंग भी करे, सेंटेंस मेकिंग भी करे, ट्रिकी वर्ड्स को भी सीखे, तो दैट इज इम्पॉसिबल। बेसिकली जॉली फोनिक्स का मतलब है टू स्टार्ट विद इनिशियल स्टेज। जब आपका बच्चा स्कूल में एंटर हो रहा है और आप उसको फर्स्ट लेटर करा रहे हैं, आपका फोकस ही लेटर एंड साउंड टुगेदर पे होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम साउंड्स कराते हैं, लेटर्स नहीं कराते। जब आप साउंड और लेटर एक साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे तब बच्चे को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मोस्टली हमारे यहाँ ये पे होता है, हम साउंड साउंड साउंड्स कराते जाते हैं, जब लेटर की बारी आती है तो हम टोटली लेटर पे शिफ्ट कर जाते हैं। यहाँ आके हमारी भी गलती हो जाती है और यहाँ आके हमारा बच्चा पिछले सारे साउंड भूल जाता है। और फिर अगर आप प्री लेवल पे अच्छा करा देते हो,
आप उसको नर्सरी में अच्छा करा रहे हैं, आप उसको केजी में अच्छा सॉरी नर्सरी और प्ले ग्रुप में अच्छा 2 लेवल्स में मॉन्टेसरी 1 और मॉन्टेसरी 2 में अच्छा करा रहे हैं, लेकिन जब आप प्रेप क्लास में जाते हैं, अगर आप वहां पर उसको फर्दर प्रैक्टिस नहीं करा रहे तो वो आगे उसको लेके जा ही नहीं सकता। तो ये वाइज वर्ड है, ये साथ साथ चलेगा। इनिशियली आपकी फर्स्ट स्टेज से ही जो है वो साउंड्स क्लियर होने चाहिए बच्चे को। आपके लेवल पे आके प्रेप में आके आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप उसको साउंड्स भी कराएं, लेटर्स भी कराएं, और फिर वो, क्योंकि प्रेप लेवल में डेफिनेटली बड़े बड़े वर्ड्स आ जाती हैं, बड़ी बड़ी रीडिंग्स आ जाती हैं, अच्छी एक अच्छा सोर्स होना चाहिए आपके पास, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपका जो इनिशियल लेवल है वो ही जो है इतनी एफर्ट्स करें बच्चे को साउंड सिखाने में। साउंड्स विद लेटर, नॉट ओनली साउंड्स, नॉट ओनली लेटर्स, ये कोई तरीका नहीं है। साउंड शुड बी विद लेटर्स, एस टी ट, देयर इज नथिंग लाइक दैट एस एस एस। शुरू में साउंड्स कराते रहे और फिर बाद में आप उसको लेटर पे लेके आए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एम ए क्लियर? शुड आई मूव? अच्छा जी, तो वंस यू आर सेइंग कि हमसे मिस हो गया, तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, so you can have a recording. Okay, should I move further dear? मैम हम दोनों चीजें एक साथ लेके कैसे चल सकते हैं? मैंने आपको बताया ना कि जब आप साउंड कराएंगी तो आप लेटर का नेम भी बताएंगी। एस, और ना ही ऐसा है, इंटरनेशनली भी ऐसा नहीं है। मेरी इस पे बहुत बड़ी डिबेट हुई और उन्होंने मुझे गलत साबित किया, क्योंकि मैं यहाँ से सिर्फ साउंड सीख के गई थी। मैंने कहा नहीं जी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, हाउ कैन अ चाइल्ड, बिकॉज व्हेन आई गेट इनटू माय जॉब, because my sounds were very clear, and mostly in that school they were from South Indians, so their sounds were not clear. So that supervisor told me that you are going to take you are going to be the head of phonics for all the sections. Now the problem is that कि मैंने तो सिर्फ phonics सीखा, मुझे तो यही था कि only phonics is there, हम सिर्फ sounds कराते हैं। लेकिन वहां पर फिर टीचर्स ने मेरे साथ डिबेट की कि नहीं, it's not phonics only। सुपरवाइजर और कोऑर्डिनेटर ने भी मुझे गलत साबित किया कि नहीं डियर, it's not like that। मैं यही सीख के गई थी कि साउंड्स पहले है, लेटर बाद में है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, साउंड्स अलोंग विद लेटर्स। How you can teach a child later that this is the sound of this letter, or this is letter belongs to this sound? They are not different at all. Phonics में कहीं पर देखिए, हम जब अरबी और उर्दू भी सीखते हैं, हम बच्चे को लफ्ज सिखाते हैं ना, हर्फ सिखाते हैं। हमारा मकसद हर्फ का नाम बताना होता है। साउंड्स भी हम सिखाते हैं, लेकिन बेसिकली जो चीज है हर्फ, जब आप लेटर ही नहीं बताएंगे तो हाउ दे विल रिकॉग्नाइज द साउंड कि ये साउंड इस लेटर से रिलेटेड है। So we have to take letters and sounds side by side. Whenever you are introducing first letter, आप S introduce करा रहे हैं, you are going to tell them sound S. जी मैम, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। हम लोग जो यहाँ पर हमें कोर्सेज करवाए जा रहे हैं मॉन्टेसरी के, तो हमें पहले उसमें साउंड ही बताए जा रहे हैं। और ये ये प्रैक्टिकली मैंने ये फेस किया जब मैं अपने बच्चों को करा रही होती थी। जब मैं नर्सरी में मेरा बच्चा आता है और फिर मुझे उसको केजी में मूव करना है, तो वहां पर मुझे कैपिटल लेटर्स जब बनाने होते हैं, उनका नेम देना होता है, वहां बच्चे और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे लेटर सी है और साउंड है ख, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे होते हैं और हमें समझ आ रही होती है कि हाँ यहाँ कोई लैकिंग आ रही है। तो आप ये बिल्कुल बात सही कर रही हैं, मैं एग्री करती हूँ। और अब मैं इसी तरह से बच्चे को पहले लेटर नेम विद साउंड, मैं इन दोनों को With लेकर। sound, बिल्कुल। जी आपने कैपिटल और लेटर देखिए, बेशक आप राइटिंग में अपना स्मॉल लेटर रखें। यूजुअली स्कूल्स में राइटिंग स्मॉल लेटर से शुरू होती है। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, हम लोग वो भी नहीं करते। ठीक है, यूएई में वो भी नहीं। अगर आप ब्रिटिश करिकुलम को फॉलो करते हैं तो ब्रिटिश करिकुलम में ये बिल्कुल भी नहीं होता। हम अपने पाकिस्तान में कहते हैं वी आर फॉलोइंग ब्रिटिश करिकुलम, हम हाथ भी नहीं लगाया अभी तक हम लोगों ने ब्रिटिश करिकुलम को। टोटली रॉन्ग है ये स्टेटमेंट कि आवर स्कूल इज फॉलोइंग ब्रिटिश करिकुलम। नो वेयर वी आर फॉलोइंग ब्रिटिश करिकुलम, कहीं पर भी टच भी नहीं किया। हम 7 एरियाज ऑफ लर्निंग को टच ही नहीं करते, तो हम कैसे कह रहे हैं कि वी आर फॉलोइंग ब्रिटिश करिकुलम?
ब्रिटिश करिकुलम का मेन एम है 7 एरियाज ऑफ लर्निंग। अगर आप दो 7 एरियाज ऑफ लर्निंग अपने एक लेसन प्लान में नहीं इंक्लूड कर रहे तो आप ब्रिटिश करिकुलम को नहीं फॉलो कर रहे, आप टीचर सेंटर अप्रोच लेके ही चल रहे हैं, आप चाइल्ड सेंटर अप्रोच लेके नहीं चल रहे। बेशक आप स्मॉल लेटर लिखवाएं, आई डोंट हैव एनी इश्यू विद दैट, और किसी को भी नहीं है, लेकिन आपने साउंड और लेटर एक साथ बताना है कि ये एक लेटर भी है ना, अगर आप खाली स्मॉल लेटर लिखवा रहे हैं बच्चे को, यू आर नॉट गोइंग टू टेल द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट, ठीक है। आपने बताना है कि ये साउंड एस है, लेटर एस है, लेटर इज एस, उसकी साउंड एस है, उसकी आवाज ये निकलती है। उर्दू में बताएं, इंग्लिश में बताएं, जिस चाहे मर्जी लैंग्वेज में बताएं, लेकिन बच्चे को ये क्लियर करें कि ये लेटर नेम है। बाद में वो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनके साथ साथ हम डबल कंफ्यूज होते हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि लेटर को पढ़ाया जाए या साउंड, और वही बात होती है कि प्रेप में जाते जाते हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम लेटर भी भूल जाते हैं, हम साउंड भी भूल जाते हैं। हाँ जी, ये अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायग्राफ। डायग्राफ आर बेसिकली टू लेटर्स टुगेदर व्हिच मेक वन साउंड, दैट इज वेरी कॉमन। आई थिंक आपने स्टार्टिंग में मिस किया जब हमने टीचर वर्ड को लिया था कि व्हाट इज टीचर वर्ड। टीचर वर्ड में कितने साउंड्स हैं? लेटर तो उसमें TEACHER 7 लेटर्स है, लेकिन उसके साउंड सिर्फ 5 है उसमें। क्यों है? ठीक है, लेटर्स हमारे पास 26 है, लेकिन साउंड्स हमारे पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसमें डायग्राफ्स भी आते हैं, उसमें ट्राइग्राफ्स भी आते हैं, उसमें लेटर ऑन स्टेज पे आपके पास जो है वो मल्टी उसमें भी आ जाते हैं। अगर आप फेज 5 में जाती हैं, दैट टच इज ग्रेड 1, दैट इज डिफिकल्ट। वो बिग बिग वर्ड्स आते हैं और उसमें आप ग्रेड 5 को टच करती हैं, जिसमें मोस्टली वर्ड्स होते हैं वो डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स से ही बन रहे होते हैं। उसमें यूजुअली हार्डली देयर इज साउंड्स इन इट, एक आध साउंड बीच में हो जाएगा, अदरवाइज वो डायग्राफ और ट्राइग्राफ से ही वर्ड बनते हैं। प्ले ग्रुप में आप साउंड्स इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये है कि प्ले ग्रुप में भी आप साउंड्स करवाएं। मैंने कहा ना कि साउंड करवाने हैं, लेकिन आपने उसका लेटर नेम भी जरूर बताना है, दैट इज मस्ट। ठीक है, अब मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ कि बेसिकली आपका अल्फाबेट चार्ट क्या होता है और साउंड चार्ट क्या होता है। ठीक है, ये आपका अल्फाबेट चार्ट है। ठीक है, ये आपने बताने के दीज आर द अल्फाबेट्स वी आर रीडिंग। नाउ यू नॉट गोइंग टू सिस साउंड्स। ठीक है, दिस इज एन अल्फाबेट मैट एंड यू नॉट गोइंग टू टेल देम द साउंड्स ऑफ इट। ठीक है, ABCDEF, दिस इज अल्फाबेट मैट। सिंपली उनको रिकग्निशन होनी चाहिए आपके इसके साथ के अल्फाबेट्स क्या है, इसके अंदर आपके अल्फाबेट्स कितने हैं। टोटल आपके 26 अल्फाबेट्स हैं, दैट इज कवरिंग इन दिस अल्फाबेट मैट। ये अल्फाबेट मैट आप अपनी क्लास में भी लगा सकते हैं, आप अपने पास हैंड आउट में भी रख सकते हैं। ये अल्फाबेट आपके पास मैट मस्ट होना चाहिए हर क्लास में, इफ यू आर नॉट डेकोरेटिंग द बोर्ड, and even if you are decorating the board for, because Montessori में हम लोग इंडिविजुअल लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, हमारा फोकस जो होता है वो इंडिविजुअल लर्निंग के ऊपर होता है। तो जब भी आप टेबल पे बैठ के इंडिविजुअल लर्निंग बच्चों के साथ करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू टेल देम द लेटर्स विद अल्फाबेट मैट। 5 मिनट निकालें और सारे अल्फाबेट्स उसको बताएं इस मैट के थ्रू। वो याद करता है करे, नहीं करता याद ना करे, दैट इज समथिंग एल्स, बट यू आर गोइंग टू रीड अल्फाबेट्स टू देम ऑन डेली बेसिस कि these are the alphabets, or play any music or any rhyme on the board। जैसे एबीसी की राइम बहुत कॉमन है, लेकिन मैथ को शो करने से ये होता है कि एटलीस्ट बच्चा उस लेटर को भी देखता है और उसकी साउंड जब आप बाद में उसको बताएंगे तो उसको रिकग्नाइज करने में इजी होगा कि अच्छा हाँ ये लेटर मैंने देखा हुआ है, इसका ये नाम है, और अब टीचर मुझे इसकी साउंड करा रही है। तो दिस इज एक्चुअली द अल्फाबेट मैथ व्हिच वी इंट्रोड्यूस ऑन अर्ली लेवल। फर्स्ट फेज 1, सेट 1 जो है वो आपका अल्फाबेट मैथ ही होता है, दिस इज फेज 1। नाउ वील मूव टू द फेज 2। अल्फाबेट मैथ तो आपने क्लियर हो गया कि डेली बच्चे को दिखाना है, डेली बच्चे को लेटर नेम बताना है A to Z। याद करते करे, नहीं करता ना करे, दैट इज नॉट योर हेडेक। इसको आपने सर पे सवार ही नहीं करना कि वो बच्चा याद ही नहीं कर रहा। यू कैन हैव दिस सेपरेट कार्ड्स ऑल्सो, यू कैन हैव दिस होल मैथ ऑल्सो, बट टीच देम डेली बेसिस। आप A to Z कराएं उसको। इसी तरह से उर्दू में भी है, आप अलिफ से ये तक डेली बताएं उसको कि ये हमारी हरूफ तहजी हैं, इनके ये नाम है, ये अलिफ से ये तक ये हैं। हम करते हैं, सॉन्ग्स में करते हैं, बच्चे उसको लर्न करते हैं।
आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे लर्न नहीं करते, वो एक अलग विजुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। ये सिर्फ आपने बताना है, इसमें आपका फोकस ये नहीं है कि बच्चे ने ये याद ही करना है या बच्चे को ये लेटर्स पता होने चाहिए और नेक्स्ट डे आप उससे बैठ के पूछ रहे हो हाँ बताओ इसमें ए कहाँ पे है बी कहाँ पे है। नहीं, ये जरूरी नहीं है, बस उसको ये पढ़ के बताना है। आपने उसके सामने रखी टेबल के ऊपर और खुद से पढ़ के बताएं कि दिस इज लेटर ए बी सी एंड देन सो ऑन टिल जी। नाउ वी मूव टू द फेज 2। अब देखिए ये है आपके फेज 2 के सारे साउंड्स, ठीक है। दीज आर योर फेज 2 साउंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर एस, a, th, h, e, d, g, o, k, ठीक है। one sound k, one sound c and k also k sound, ठीक है। few words are having c sound, few words are having k sound and few words are having combination of c and k। ये भी बहुत कॉमन है आपका, अगर आप अपने वर्ड्स उठा के देखें तो ये सी खे ख इज अ वेरी कॉमन वर्ड, वेरी कॉमन साउंड। डायग्राफ, अब ये डायग्राफ है यहाँ पर सी और के, पहला डायग्राफ ही आपका जो है वो कितने साउंड्स के बाद आ रहा है, 8 9 10 11 12 12 साउंड्स के बाद आपका पहला डायग्राफ आ जाता है। Why Jolly Phonics is there? This is the reason. You are introducing for sounds and diagrams and trigraphs together. तो पहला आपका डायग्राफ कहाँ पर आ गया, 12 लेटर्स के बाद आपका सीखे ख का डायग्राफ आ गया। और मोस्टली वर्ड जो है आपके वो सीखे ख से ही शुरू होती हैं, मतलब उसमें ये जरूर आते हैं। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है a, o, b। नाउ डबल लेटर साउंड्स आ गए हैं के साथ, डबल एफ साउंड आ गया। डबल एफ लेटर जो है वो भी बहुत कॉमन है, हम इसको डबल एफ नहीं लॉन्ग एफ साउंड बोलते हैं। स्मॉल इज देन लॉन्गेस्ट देन ल देन हिस मिस मेस, ठीक है। so many toss boss cross, so many words are there with these sounds also. So these are not double letters, we call them long sounds, ठीक है। long sound of f is where we use double f, 2 times f, then l, long sound l is double l, l. Then till now please tell me everything is clear. Yes, ma'am. ठीक है, आप समझ आया आपको। फेज 1 में हम लोगों ने सिर्फ अल्फाबेट मैथ की है, डेली आप बच्चे को अल्फाबेट मैथ ही कराएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कराएंगे, ठीक है। सिर्फ उसको एक 5 मिनट देने हैं आपने उसके साथ बैठ के उस मैथ को पढ़ने के लिए। आप चाहें तो छोटे छोटे मैथ सारे बच्चों को भी दे दें, एक पेपर पे अगर आप प्रिंटिंग अगर आपके लिए इजी हो स्कूल्स में तो एक पेज पे आप 2 भी कर सकते हैं, एक A4 पे में ना 2 प्रिंट्स ले लें, उनको लैमिनेट करा के रख लें, वो कार्ड्स आपके लॉन्ग लाइफ चलती हैं, ठीक है। लेमिनेशन मस्ट करें, अगर आप लेमिनेशन नहीं कर सकते नहीं करवा सकते तो उसका आसान तरीका ये है कि आप उसके ऊपर टेप लगा लें, जो स्कॉच टेप होती है ना चौड़ी वाली, सही थिक वाली ब्रॉड वाली, आप उसके थ्रू उसको कवर कर लें, ठीक है। उसमें ही होगा कि वो उसके ऊपर राइटिंग भी कर सकते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। नहीं तो आप कोई शीट वगैरह भी उसके ऊपर, प्लास्टिक शीट जो बच्चों के कवर्स वगैरह होते हैं वो भी रैप कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी फिनिशिंग नहीं देती जितनी आपकी अच्छी फिनिशिंग जो है, एक दफा पैसे लगाएंगे आपके जितने जो आप लैमिनेशन देती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और लैमिनेशन का ये फायदा होता है कि वो खराब नहीं होती, फटती नहीं है, गीली नहीं होती, और बच्चे उसको इसी के ऊपर अगर आप उनको पेन दे के ट्रेस भी कराना चाहें तो वो ट्रेस भी कर सकते हैं, और बाद में आप उसको बोर्ड मार्कर्स को रिमूव भी कर सकती हैं, सैनिटाइजर से भी क्लीन कर सकती हैं, क्लीनिंग मैट वो मिलती हैं जेल्स, आप उससे भी क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान तरीका है सैनिटाइजर से क्लीन करना। मैं तो अपने सारे आसान और सस्ता तरीका है कि बोर्ड भी और अपने ये वाले भी जो चार्ट्स होते हैं कार्ड्स होते हैं सैनिटाइजर से महीने में 1 दफा या 2 दफा सारे साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मार्कर्स लग जाते हैं। लेकिन ये बहुत इजीएस्ट वे है बच्चों के साथ काम करने के लिए, ठीक है। ये आपका फेज 2 का साउंड मैट हो गया। अब इसमें आपने सेट्स के हिसाब से चलना है, और सेट्स के आगे मैं आपको बताती हूँ कि पहले जब वो सेट कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके साइड वर्ड्स भी साथ कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उनमें कौन कौन से वर्ड्स उसके बीच में आएंगे, ठीक है। ये फेज 2 का साउंड मैट हो गया। अब आता है आपका फेज 3 का साउंड मैट, उसमें कौन से लेटर्स आते हैं, ठीक है। ये फेज 3 का साउंड मैट है, ज, वो,
year, then double Z, okay, long Z, okay, small Z, zebra, then buzz, okay, then diagrams start coming, quaw, sh, sh, A, E, I, O, O. अब O में भी 2 है, moon and book, ठीक है, moon is a small double sound, double O sound, digraph sound, and book is a long vowel sound. R, or, these are naughty R words. R, or, ठीक है, इनको naughty R words बोलते हैं. ये 3 words है, 3 digraphs हैं जिनको naughty R's बोलती हैं. R, और, इसमें सिर्फ साउंड बेसिकली आर का ही आ रहा है, लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा सा शुरू में जो स्टार्टिंग में है ना, आपको ए, ओ और यू को थोड़ा सा जो है वो उसके साथ ब्लेंड करना है, जैसे आर, और, अर, ओके, आओ, आई, ईयर, एयर, योर, एर, ठीक है. दीज आर सेट्स ऑफ डायग्राफ्स एंड ट्रायग्राफ्स एंड सिंपल साउंड्स. इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, अब आप यहाँ देखें कि ये जहाँ पे क्वा साउंड इंट्रोड्यूस करवाया ना, हमने क्यू की राइटिंग नहीं कराई, ठीक है. मोस्टली क्यू जो है, आप जब अपने वर्ड्स में भी देखें और जरा सा थोड़ा सा ध्यान लगाएं, तो क्यू और यू ऑलवेज यूज टुगेदर. आप सेपरेट उनको राइटिंग के लिए दे सकते हैं कि दिस इज क्वा एंड दिस इज अ, बट ये जब यूज होते हैं तो मोस्टली दे आर यूजिंग टुगेदर. स्पेशली मैं क्यू की बात कर रही हूँ, और उसका साउंड भी क्वा ही है, ठीक है. समझ आ गई? नो मैम, मुझे समझ नहीं आया. क्या मेरी जान, क्या समझ नहीं आया? जी बोलिए, क्या समझ नहीं आया बेटे? जी मैम, मैं ना ये पैटर्न ही फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो इसलिए ना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कैसे इस चीज को लेके चलना है. ये देखो, बाकी तो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल के ऊपर ना, आपका स्कूल इसको फॉलो करता है या नहीं. लेकिन बेसिकली इफ योर स्कूल इज सेइंग दैट दे आर जॉली फोनिक्स फॉलोइंग, देन ये साउंड मैथ्स है आपके. आपने इसी पैटर्न में साउंड्स कराने हैं. इंशाल्लाह मैम, नेक्स्ट टाइम लोकेशन के बाद आई फॉलो दिस मैथ, बट हाँ, अभी तक तो खुद क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं कैसे बच्चों को टीच करवाऊंगी. सिंपल साउंड्स हैं, जिस तरह साउंड्स हैं वैसे ही साउंड्स हैं. सिर्फ एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब आपने साउंड टीच करना है तो आपने लेटर नेम जरूर बताना है बच्चे को, ठीक है. पहली चीज, जैसे आप ये साउंड्स करा रहे हैं तो आप जरूर बताएंगे, एक अपने लेक्चर में जरूर इस चीज को रखेंगे कि एस इज, ठीक है, ए इज ए, टी इज ट. पहली चीज तो मैंने ये बताई है, उसके बाद ये साउंड्स हैं. अभी मैं आपको यस फ्रेजिंग बताती हूँ, मैं आपको नोट्स भी भेजूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग भी करा सकती हैं, ठीक है ना. यस मैम. ठीक है, उसमें सारा लिखा होगा, जैसे ये अब आगे आ गया. अब हम इस तरीके से साउंड कराते हैं. सेट 1 में हम पहले 4 साउंड कराते हैं, दैट इज एस, ए, टी, पी, ए, थ, ह. जब हमने ये 4 साउंड बच्चे को करा दिए ना, ये 4 साउंड से जो 2 साइड वर्ड्स हमारे पास आते हैं वो एज और एट आ जाती हैं, ठीक है. एज और एट आपने साइट वर्ड्स के थ्रू कराने हैं, आपने साउंड्स के थ्रू नहीं कराने. मोस्टली स्कूल्स में, इवन मैं खुद पर्सनली, आई ऑल्सो फॉलो द सेम. एज को मैंने कराया है ए और के साथ, ठीक है. एस नो, गलत था ये. It should be as, at at, an, in, it, go, do, me, us, of, on, up, double l all. Sorry, not l. ठीक है. तो ये आपने साइड वर्ड्स, अब आपने जब ये सारे साउंड्स कराए, by the end of 1, 2, 3, 4, 5, 6, after 6 weeks,
योर चिल्ड्रन विल एबल टू लर्न ऑल दी साइट वर्ड्स। और भी साइट वर्ड्स होते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहे थे, वो भी मैं पूरी आपको लिस्ट ऑफ साइट वर्ड्स भेज दूंगी कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 में आप किस तरह से साइट वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और बाकी ये लेटर की इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सेट 1 में आपने SATP करवाया, उसके साथ फिर आपने 2 साइट वर्ड्स कराए। अब SATP में से आप मुझे कोई भी चार वर्ड्स बताएं जी। अब SATP तक क्या वर्ड्स बन सकते हैं आपके, जल्दी, क्विकली क्विकली। सेट, सेट, टैग, मैथ। नहीं, मैथ तो नहीं आएगा ना, M नीचे है। SATP को यूज करके सैट हो गया, टैप हो गया, पैट हो गया, और क्या हो सकता है? टैब, हाँ, टैप हो गया, सैट हो गया, पैट हो गया। सिट, नहीं, आई नीचे आ रहा है ना, सेट। फिर हमें आगे जाके अब देखिए 3 वर्ड्स तो इजीली आपके निकल सकते हैं यहाँ से, सैट, पैट, टैप। तो एक ही हफ्ते में आपने 4 लेटर भी सिखाए, 4 साउंड्स बताई, 2 साइट वर्ड्स भी बता दिए साथ ही उनको, और 3 लेटर्स, 3 वर्ड्स भी बता दिए सीधे। जब ये 3 साउंड सीखेंगे तो आपको क्या लगता है वो वर्ड्स नहीं बना सकते? बताएं ना, एक जनरल क्वेश्चन है। यस मैम, जरूर। ठीक है, बेसिकली तो साउंड्स का मतलब क्या है, साउंड का मकसद क्या है? बच्चे को वर्ड बिल्डिंग सिखाना ना, ब्लेंडिंग सिखाना, सेगमेंटिंग सिखाना, क्रॉसवर्ड सिखाना। आप मुझे बताएं, जब आपने 3 लेटर सिखाए तो उसके साथ क्या आप 4 वर्ड्स नहीं करा सकते उसको? लेकिन मैम यहाँ एक प्रॉब्लम है ना कि हमारे पास, आपको पता है, जितना फिक्स्ड वो मिलता है, पैटर्न मिलता है, हमने उसी पैटर्न को फॉलो करना होता है। और उस यही पैटर्न के तो मसला मुताबिक है ना। सेट करवा नहीं सकते हम। मैम मैं भी देखिए, आपको एग्री करती हूँ, तो फोनिक्स का अलाउ है कि हमने स्कूल में ना जस्ट फोनिक करवानी है, और बस साउंड भी नहीं है, सिर्फ आपको बच्चों को ना फर फर आ, बट सा ये आना चाहिए। तो कुछ सीखने को मिला है, तो हमारा अच्छा एम देखिए, यही है कि हम अच्छा बच्चों को सिखाएं मैम, पर हम अपने बिल्कुल। पाकिस्तानी को कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, मैं यही आपको बता रही हूँ ना कि वट एवर योर स्कूल इज फॉलोइंग, फॉलो दैट पैटर्न। लेकिन उसमें फिर ये वर्ड्स होते हैं, और उन्हीं वर्ड्स को लेते हुए जब आप 4-5 वर्ड्स अपने बच्चे को, लेटर्स सॉरी, 4-5 साउंड्स अपने बच्चे को करा देते हैं ना, उनसे रिलेटेड कोई भी छोटे छोटे वर्ड्स बनते हैं ना, तो आप उनको जरूर कर। अदरवाइज प्लीज अपने स्कूल्स को बताइए कि दिस इज द एक्चुअल पैटर्न। मुझे पता है शायद ये आपको भी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन बिलीव मी, इट इज द इजीएस्ट पैटर्न। इसको सीखने और सिखाने के बाद आपके पास, लाइक आपके बच्चे जब ग्रेड प्रेप में या 1 में जाएंगे ना, तो दे कैन डू देयर रीडिंग्स बाय देमसेल्फ। वो ऐसे रीडिंग करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। थोड़ी एफर्ट आपकी भी लगेगी, लेकिन इट इज द इजीएस्ट वे, इसमें कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। हमारा फोकस क्या है? बच्चे को राइटिंग आनी चाहिए बस। नीट राइटिंग में वो एस लिखे, और पेरेंट्स भी यही कहेंगे ओ यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे ऊपर हो गया, यहाँ पे नीचे हो गया। आपने वो भी उसको मार मार के राइटिंग ही सिखाएंगे। राइटिंग सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में, इवन मैंने अब देखा कि इंडिया में भी राइटिंग पे कोई फोकस नहीं है। उन पेरेंट्स का भी पहला सवाल यही होता है, हमारे बच्चे को रीडिंग कितनी आ रही है। हमारा बच्चा रीडिंग नहीं सीख रहा, रीडिंग कब आएगी उसको? वो भी राइटिंग से कंसर्न ही नहीं रखते। और उनकी राइटिंग इतनी खूबसूरत राइटिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने पाकिस्तान में किसी की राइटिंग इतनी खूबसूरत, जितना अरसा मुझे हो गया 18-19 साल काम करते हुए, मैं अपने फेलो टीचर्स की बात कर रही हूँ, अपने पीयर्स की बात कर रही हूँ, मैंने इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग किसी की नहीं देखी जितनी खूबसूरत हैंड राइटिंग इंडियंस की है। और उनका फोकस राइटिंग पे है ही नहीं। हमारा सबसे बदनसीबी है कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ राइटिंग पे रह गया। लिख ले बस, वो कॉपियां भर ले, किताबें भर ले, पूरी पूरी चैप्टर्स हम उसको करा दें, बस दैट्स इट। आता उसको है, नहीं आता, नथिंग डू विद दैट। आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन आप जितना इसके ऊपर एफर्ट पुट कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है। जी, कोई मुझे कुछ कह रहा है?
यस मैम, मैं कह रही हूँ कि ना हम हमारे एरिया में ऐसे स्कूल्स भी हैं मैम, 9th-10th के बच्चों को रीडिंग नहीं आती, उन्हें बिल्कुल हाँ भी बोलना नहीं आता। बिल्कुल। तो हमारा तालीमी निज़ाम ही ऐसा है कि हमें स्टार्ट से ही अभी अभी जो है, मुझे कुछ अवेयरनेस आई है, मैं अपने बच्चों को इम्प्रूव करूंगी, और इसके अपने मतलब मेरे जाती जो बच्चे हैं उन्हें, और फिर जो मेरे जी स्कूल के जी बच्चे हैं वो भी मेरे साथ ही हैं, इंशाल्लाह ताला मैं स्कूलिंग लेके चलूंगी। बट मैम हम लोगों का बस सिर्फ कोई किसी बच्चे पे तवज्जो नहीं है मैम, को आप पढ़ना तक नहीं आता। मुझे पता है, बिल्कुल ऐसा ही है। Why? Because we never focus on reading on early stages. हमने बच्चे को शुरू से रीडिंग की आदत ही नहीं डाली। ग्रेड 1 में एकदम जाके हम जब उसको बुक देते हैं और उसको कहते हैं ओपन चैप्टर दिस एंड पेज नंबर दिस एंड स्टार्ट रीडिंग नाउ, हाउ कैन ही रीड? जब हमने एक बच्चे को इनिशियली स्टेज से रीडिंग की आदत ही नहीं डाली, हम कैसे एकदम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टूटे टूटे लफ्ज बना रहा था वो एकदम आके एक पूरी किताब पढ़ना शुरू कर देगा? हम सिखाएंगे तो वो सीखेगा ना। इंटरनेशनल लेवल पर रीडिंग इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले भी कि हम जब बच्चे को लेटर भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लेटर नहीं इंट्रोड्यूस करते। हम ये नहीं कहते कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेटर एस और लेटर्स और साउंड्स। हम वर्ड्स रखते हैं उसके सामने, पिक्चर्स होती हैं, रिकग्निशन करता है। पिक्चर रिकग्निशन, विजुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बहुत ज्यादा है, बहुत तेज है। आजकल के बच्चे तो वैसे ही कंप्यूटर का कीड़ा है। उनकी उनकी विजुअल लर्निंग बहुत तेज है एज कंपेयर टू दिस अदर लर्निंग। वो विजुअली लर्न करता है, तो हम उसको विजुअल इमेजिनेशन इमेजेस दिखाकर फिर उससे वर्ड बिल्डिंग करवाती हैं, फिर उससे साउंड निकलवाती हैं, साउंड निकलवा के फिर वर्ड बिल्डिंग करती हैं। अच्छा मैम, मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था। ये जी हमारे जी स्कूल में शो एंड टेल की बुक्स हैं ऑक्सफोर्ड की ना, लेवल वाइज है, लेवल 1 2 3 ना। तो उसमें जो सी साउंड्स हैं जितना आप बता रही हैं, अब वो तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, लेकिन वो भी वहाँ भी साउंड जिस तरह है वो सिंपल एक अल्फाबेट लेटर्स के थ्रू है। और फिर जो सेकंड लेवल है उसके अंदर उन्होंने डायग्राफ्स के थ्रू करवाया, और जो लेवल 3 है उसमें लॉन्ग हम्म, साउंड जो है ना साउंड है। लेकिन उसमें भी इस तरह जिस तरह आप ही फेजेस बता रही हैं उस तरह फेज वाइज नहीं है। और जो साइड वर्ड्स आप बता रही हैं जो लेवल 1 में है वो लेटर वाइज है, मतलब अल्फाबेटिकली ए टू जी जितना जा रहे हैं वैसे ही है। तो वहां भी तो प्रॉब्लम है ना। देखिए अब हमारा बेशक वो इंटरनेशनल जितनी चीजें आपने अभी तक पिछले आपने जो मेथड का बताया था उसमें भी सेम था, काफी चीजें हमारे स्कूल में वैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। लेकिन ये जो जहाँ से आप ये साउंड्स वाला सिस्टम बता रही है, लेकिन वो यही मुझे यहाँ कंफ्यूजन है कि वो ऑक्सफोर्ड वालों ने भी जो दिया है हमें लिटरेसी की बुक्स लादा है, न्यूमेरेसी की लादा है, लेकिन उधर भी साउंड का सिस्टम जो है ना बिल्कुल चेंज है जिस तरह के पेजेस आप बता रहे हैं। और ये इजी भी है, इवन के राइटिंग पैटर्न में भी कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो इजी है। ऐसा है कि ये इंटरनेशनल लेवल तो नहीं ये है, ये क्यों है? बात याद रखिएगा। हमारे यहाँ आई डोंट नो अबाउट अदर स्कूल्स, लेकिन मैम आपकी बात सही नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, मैंने कहा ये इंटरनेशनल लेवल नहीं है। इट इज एक्चुअली द ट्रू मीनिंग ऑफ जॉली फोनिक्स। आई हैव आल्सो अटेंडेड द वर्कशॉप ऑफ जॉली फोनिक्स फ्रॉम समबडी हियर इन पाकिस्तान आल्सो। दो लोगों की मैंने वर्कशॉप अटेंड की, और जो उन्होंने सिखाया था अल्लाह, वो बिल्कुल ही गलत था। मतलब मैं ये सोच के गई थी क्योंकि यूएई में यही चीज फॉलो की जाती है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी लर्निंग मेरी पहले से होनी चाहिए, और वो टोटली गलत थी। बेसिकली हमारा अपना नॉलेज उतना नहीं है। ये भी बात है ना कि हम जो जिस चीज को आगे लेके चल रहे हैं, हम ये सोचते ही नहीं कि हम किसी को जो चीज सिखा रहे हैं आइदर वो ठीक होगी भी कि नहीं। चेंज लाना बहुत जरूरी है। मैं आप सब लोगों को यही कहूंगी जो आज सीख रहे हैं, प्लीज वो एटलीस्ट जाके जरूर बताएं सबको कि दिस इज द एक्चुअल थिंग ऑफ जॉली फोनिक्स। ये एक्चुअल चीज है जॉली फोनिक्स की। फिर तो आप जो सिखा रहे हो तो 26 साउंड्स है, सिंपल फोनिक्स। डोंट कॉल इट जॉली फोनिक्स। और उससे बच्चा कभी रीडिंग नहीं सीख सकेगा। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि फॉनिक्स और जॉली फॉनिक्स का भी इधर कंफ्यूजन है, इनको वो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते मोस्टली लोग कि फॉनिक्स हाँ, और जॉली फॉनिक्स की डिफरेंस क्या है। द द मेन थिंग इज दैट कि हम लोग समझते ही नहीं है कि जॉली फोनिक्स क्या है और फोनिक्स क्या है। हम कहते हैं बस एक ही चीज है जॉली फोनिक्स, बस ये वीडियो दिखा दिया, पिक्चर दिखा दिया, दैट्स इट। नहीं, जॉली फोनिक्स टेक्निक इज टोटली डिफरेंट, एंड दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट टेक्निक आई फील पर्सनली। क्योंकि मैंने पढ़ाया ना इसमें, फिर मुझे पता चला कि वाकई मतलब मेरे पास जो बच्ची है दैट इज
age 6 years old. ठीक है, and I will share their work with you someday. They can do the writing on their मैम books आपकी by वॉइस चली themselves. गई। They can do the reading and writing by themselves. मुझे उनको नहीं लिखवाना पड़ता, सेंटेंस स्टार्टर्स में उनको देती थी और वर्ड्स के साथ वो खुद सेंटेंसेस बनाते थे। नहीं, अभी आप जो ये पैटर्न फेस वाइज हमें शो कर रही हैं, बता रही हैं, जो ये में यही पैटर्न मसलन स्टार्टिंग से है प्री क्लासेस से में यही पैटर्न हाँ यूज होता है। जी 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 जी। अब जैसे हम लोग, ये अल्फाबेट मैट है हमारा, ठीक है, इस अल्फाबेट मैट को जो है हम लोग रोज दिखाते हैं। ये मैं आपको 1 का बता रही हूँ, ठीक है। 2 है हमारे, KG1 एंड KG2। उसके बाद हम डायरेक्टली 1 क्लास में जाते हैं। हमारी और कोई तीसरी क्लास नहीं है, हमारा प्रेप सिस्टम नहीं है, ठीक है। KG1 एंड KG2, बस दैट्स इट। उसके बाद बच्चे सीधा ग्रेड 1 में जाते हैं। ऑल ओवर द अच्छा, यूएई यही वन है। में आप शो करते हैं अल्फाबेट मैथ की माइनस साउंड्स वाला, सॉरी, ये आप लोग KG1 में शो करते हैं, ये जो हाँ मैथ्स ये हैं। KG1, हाँ ये अल्फाबेट मैट KG1 में शो करती है, और साथ ही इसके ये साउंड शुरू हो जाती हैं। साउंड्स का जो राइटिंग पैटर्न होता है वो इसी तरीके से है। फेज 2 के सारे साउंड्स बच्चा करके आता है पीछे से। जब हमारे पास आते हैं तो हमने उसको फेज 3 के साउंड्स कराना शुरू होते हैं और फेज 2 के रिवाइज कराते हैं। अच्छा, जब ये जो लेटर्स की सीक्वेंस है A to Z, वो सीक्वेंस वाइज इस तरह आप लोग नहीं इनको पहचान कराते, आप साउंड्स जो करवाएंगे वही लेटर्स इनको पहचान कराएंगे। मतलब सीक्वेंस नहीं होगा A B C जिस तरह हम करवाते हैं, वो सीक्वेंस नहीं वाइज नहीं, नहीं ये भी करवाते आप। सीक्वेंस जो है ना, वो सिर्फ इस अल्फाबेट मैट के थ्रू शो कराते हैं कि दिस इज द सीक्वेंस, ताकि उनको सीक्वेंस भी पता हो, ठीक है। दैट इज ओनली रीडिंग पार्ट, या यही कार्ड जो है वो क्लासरूम्स में इसी तरीके के कार्ड जो है डिस्प्ले होती हैं, और साथ साथ उनके मैथ्स भी होती हैं। हर बच्चे का एक टेबल का मैथ मस्ट होता है, यानी कि एक टेबल पे अगर 6 बच्चे बैठते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास ये 6 मैथ्स होने चाहिए, अल्फाबेट मैथ्स, ठीक है। ओके ये मैम, थैंक अल्फाबेट यू। रीडिंग हम कराते हैं कि ये दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट, ये जरूर हम बताते हैं कि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट KG1 में, ठीक है। और KG1 में साथ ही साथ ये सारे साउंड्स कराए जाते हैं। इसमें डबल साउंड्स नहीं आते और डायग्राफ नहीं आता, लेकिन सिंगल साउंड जितने वो करा सकते हैं वो करा के भेजते हैं। और उसके साथ साइट वर्ड्स भी कराते हैं, ठीक है। सीवीसी वर्ड्स की रिकग्निशन भी होती है, मिडिल साउंड, एंडिंग साउंड, बिगिनिंग साउंड, वो भी सारा वो KG1 में करके आते हैं, इन लेटर से रिलेटेड, एक्स्ट्रा नहीं मैम कुछ। साउंड ये साइड वर्ड्स तो हमारी तरफ भी होते हैं, लेकिन लेवल 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वही वाली बात कि इस तरह नहीं होते जितना जॉली फॉनिक्स का आप पैटर्न बता रही हूँ, वैसा नहीं है। तो हाँ, स्पेसिफिक वर्ड जितने हो जाते हैं वो वाले वर्ड्स उनमें दिखा देते हैं साइड वर्ड्स के तौर पे, नहीं नहीं इस नहीं तरह नहीं, नहीं। तो ये पैटर्न के थ्रू है। अब आप इनको देख सकते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सारे आपके सेट से निकले हुए हैं। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है और कोई लेटर ऐसा नहीं है जो पहले इंट्रोड्यूस हो रहा और आपने लेटर नेम नहीं कराया हुआ या लेटर साउंड नहीं कराया हुआ और उसको मैंने उसका साइट वर्ड या उसका वर्ड पहले से करा दिया हो। जब मैंने आपको कहा SATP, तो आपने मुझे सिर्फ SATP के ही वर्ड्स बताने हैं। जिसने सिट कहा था उसको मैंने नहीं माना। जब हमने आई इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया तो हम सिट वर्ड कैसे करा सकते हैं? समझ आई बात की? यस मैम। मैम ये डबल F का क्या कॉन्सेप्ट है? सॉरी, मैम डबल ये एफ का डबल, लॉन्ग जी जी, साउंड है, ये एफ की लॉन्ग साउंड है। स्मॉल साउंड इज लॉन्ग इज, ठीक है। सेम लाइक फॉर LNS, short sound is L and long sound of L is L, in which we use double L. Okay, you can tell them also it's double L. Yeah, 2 times L, 2 times F, or double. That you can, that vocabulary you can introduce them. यस मैम। ठीक है। मैम एक लेकिन प्रॉब्लम आ बेसिकली, रही है मुझे थोड़ा सा, जी जी, वो इसमें नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दे। TCH साउंड और CH साउंड चिल साउंड है। TCH साउंड के साथ में वॉवल्स यूज करते हैं, तो TCH में T साइलेंट हो जाता है, ऐसा ही है?
क्लियर, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। आप मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे साथ साथ आप क्या पूछ रही हैं? मैम TCH साउंड ट्राइग्राफ में होता है, TCH। हाँ TCH, ठीक है, टच, जी यस, हाँ जी। इसी तरह च साउंड है CH। जी जी। अब दोनों को जो है बीच, बेंच, इस तरह की साउंड में डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। TCH मैंने जो नेट पे चेक किया था कि TCH साउंड जो होती है, इनसे पहले वॉवल्स आ रहे होते हैं और इसमें च साइलेंट हो जाता है, च ही आता है। इज इट राइट? नहीं, टच साउंड में तो बेसिकली ये साउंड तो ग्रेड 1 से आगे का है, लेकिन आपकी बात अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि वोवल अगर उससे पहले आते तो साइलेंट हो जाता है। जी, उसमें वो ये बताए थे कि टी साइलेंट हो जाता है अगर वॉवल बोलना है इससे पहले, तो च साउंड ही आती है इसकी भी। हाँ, ये साइलेंट वर्ड्स का एक अलग रूल होता है, वो डिपेंड करता है। साइलेंट वर्ड के जो रूल्स है ना, तो नहीं देखें अभी जो वो अभी ट्राइग्राफ तो है ना TCH हमारा, अब इसके साउंड किस तरह बताएंगे और किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे TCH साउंड और CH? कौन से साउंड, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं आपको ना शेयर तो करूंगी, मैं बुक से समझ ना। आ गए। दूसरे आप कौन से कह रही हैं? CH तो छ साउंड है, और CH हर जगह छ ही यूज होता है, चाहे उसके पहले वॉबल आए या ना आए। जो अभी तक मैंने वर्ड्स कराए हैं, छ में छ ही यूज होगा। चेयर है, अब चेयर है, जिस तरह चेयर में सिर्फ दो साउंड्स है, मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। छ एंड एयर, चेयर। लाइक फैच, बड़ा मतलब फैच। मैंने कहा जिस तरह छ साउंड में चेयर है ना, चेयर वर्ड में यस दो मैम, साउंड, सो दैट डिपेंड्स। यस हमारे पास राउंड वो भी तो है, ठीक है स्क्वायर भी है। जी जी। मैम। प्रॉब्लम TCH साउंड में आ रही है, जो लास्ट में TCH साउंड आती है, जैसे स्केच है, स्केच है, इसमें आप देखें टी साइलेंट है, आप वर्ड्स लेकिन लिखेंगे है तो ये मुझे समझ आएगा। आप ट्राइग्राफ। चैट बॉक्स में लिखेंगे वर्ड्स प्लीज, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप चैट बॉक्स में वर्ड्स लिखें प्लीज। फैच, फैच में कहा कैच साउंड है, ये TCH साउंड, इसमें टी साइलेंट नहीं है। एच, फैच, ये साउंड है, ये CH भी नहीं है, CH साउंड है। श का प्रोनाउंसिएशन ऊंचा है, श। ये जो आप बोल रही है ना, ये साउंड है, फैच, कैच, ख, स्केच, ठीक है। ये बेसिकली जो TCH है ना, इसको आप छ ही पढ़ेंगी। दीज आर वर्ड्स फॉर ग्रेड्स, ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के वर्ड्स हैं, ये वो ट्राइग्राफ्स आ जाते हैं। समझ आई शफक आपको? इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि TCH में टी साइलेंट है, आप TCH पूरे को ऐसे पढ़ेंगे। आप जैसे मैं आपको कह रही हूँ एयर, एयर, ठीक है। अब एयर को अगर आप साउंड्स में करें तो साउंड्स में तो वो डिफरेंट हो जाएगा, AIR है, ER है, लेकिन जब हम उसको मिला के पढ़ेंगे तो वो एयर है। जहां पे भी ये जाएगा ये एयर ही रहेगा। जैसे एयर, चेयर, एयर, हेयर, ट्राइग्राफ में ही बनाना है ठीक है। इसे। टी सिंगल और AIR 3 साउंड्स, तो इसको हमने फोनिक्स में ट्राइग्राफ्स को इसी तरीके से टीच करना होता है। ओके आप मैम, जहां पे थैंक भी यू। ये वर्ड्स लिखेंगे आप यही बोलेंगी, इसको 3, आप इसको 3 उसमें डिफरेंशिएट, अब इसको 3 सेगमेंटिंग है इसकी, ठीक है। इसमें 3 साउंड्स है, अलग है, अलग, और TCH अलग। TCH में शेड भी इस वे में करेंगे, और TCH के नीचे डॉट्स लगते हैं,
वो मैं आपको पेरेंट्स बताऊंगी। और जो मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ट्रायग्राफ्स होते हैं ना, उनके नीचे लाइंस लगती है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, ये ट्रायग्राफ है, इसको ट्रायग्राफ ही लेके चलेंगे। यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगी कि ये साइलेंट होगी, इट्स अ ट्रायग्राफ। ये तो दिस इज इट। हमारा आज के दोनों लेक्चर हो गए, कल का भी हो गया। Okay, class, is it clear to everyone? ठीक है, all the things are clear? Yes, ma'am. ठीक है, so we have completed 2 sessions, yesterday's session also and today's session also, and the thing I think everything is discussed and explained well. Is there anything you can ask me or share with me also? ठीक है, लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी कि रीड एंड पेयर एंड शेयर ये जो है ना साउंड्स को लेके हम कैसे करते हैं, वो भी फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज इस वीक के लिए हम टास्क रहने देते हैं, क्योंकि आज हमने 2 सेशन एक साथ लिए हैं। टास्क में इंशाल्लाह ताला से फिर नेक्स्ट वीक में रखूंगी। ठीक है, यस मैम। ठीक हो गया ना? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।